Hello, Snehil. Hello, sir. Good afternoon, Panda साहब. गुड आफ्टरनून. कैसे हैं स्नेहिल आप? ठीक है. बहुत बढ़िया मैम. आप कैसे हैं मैम? वेरी वेल, थैंक यू. Shawan ji, how are you? Well? I'm good. Yes, I'm doing great. How are you, ma'am? Very well, thank you. Okay, so I think we can start now. Hello, everyone. A very pleasant good afternoon to all the dignitaries present in the launching ceremony of Ajivika. So today, this is the another launch of our startup from Jabalpur Incubation Center. Again, I would like to welcome Ashish Pathak sir, CEO of Smart City, Sohan sir, Anuya ma'am, CLGF from CLGF, and Shahzad sir from CLGF, and we have Snehil with us from Ajivika, who is the founder of Ajivika. So, on behalf of the Jabalpur Incubation Center, I want to congratulate Snehil Namde, who is the founder of Ajivika. And again, I'm very thankful CLGF, Anuya ma'am, and who always, being supportive for our startup. And again, it's a thing that the grant to again Ajivika. So basically, we'll talk about what exactly Ajivika is. So our program is dedicated basically to provide a wide range of business opportunities to the entrepreneurs living in rural areas with the information about the products to be made, registration of all products, setting up of production units, preparing goods for sale, reaching it to the local market, and as a solution to problems like availability of raw materials will serve not only the beneficiaries of the first parcel but also the beneficiaries of the last parcel. And nowadays, if we'll talk about the rural entrepreneurship, it's a major opportunity for those who naturally migrate from rural areas or semi-urban areas to the urban areas. So on the contrary, it's also a fact that the most rural entrepreneurs are facing many problems due to non-availability of the primary facilities in rural areas, especially in developing countries like India. So financial problems, lack of education, technical and ideological capacity are currently very difficult for rural entrepreneurs to set up industries in rural areas. Certainly, economic development of our country depends to a large extent. So industries in rural areas, certainly the economic development of our country depends on the large extent on the development of rural areas and also the quality of life of its rural people. So rural entrepreneurship is definitely one of the most important inputs for the economic development of the country and for areas within the country. Today, entrepreneurs are motivated to achieve success in their business along with the qualities inherited by dreamer, leader, manager, innovator, constant learner, and decision maker. And all these qualities are applied in the work is the most important things to do. Certainly, entrepreneurs exemplify turning their dreams into reality. More importantly, the story behind the realization of dreams is to set goals on a large scale and remain committed to achieving them, regardless of the obstacles that drive them unmissed passion and the ambition to achieve the goal. So undoubtedly, it sounds fascinating, engaging, and inspiring after listening to the stories of the entrepreneurs. But certainly, success is not easy as it always looks. So again, it's the same thing with the Ajivika. So we have Snehil with us. Snehil, I want to hear from you. मुझसे जितनी तारीफ हो सकती थी मैंने कर दी. But it's all about you that you have to explain what exactly Ajivika is all about. And then we'll move forward to our mentors. We'll take their views, what they think about your product. Go ahead. Over to you. Thank you so much, Barka, and I'm very glad to see you, sir, Shahzad sir, Anuya ma'am, Sohan sir, and CEO Saab as well. So basically, Ajivika is a journey of traditional India to trendy India. In one line, we can say this about Ajivika. So basically, एक thought था हमारे पास आजीविका को लेके
हमारे बहुत सारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान किया लास्ट ईयर कि जो प्लेटफॉर्म उन सभी रूरल एंटरप्रेन्योर्स को उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रीच दिलाने की कोशिश करता है। तो ये एक आजीविका को लेके थॉट था। उसको धीरे धीरे डेवलप करते करते हमने रिसेंटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टेट टाई अप विद MPSRLM। तो बेसिकली हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं MPSRLM के, हम उन्हीं के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रीच दिलाने की कोशिश करते हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। So this is about Ajivika. Okay, so we have Ayachi sir with us from Smart City. Ayachi sir, can you hear me? Yeah, you are audible, Barka. Okay. So sir, आपके views क्या हैं स्नेहिल के product launch के बारे में? थोड़ा सा अपना view Yeah, sure. First of all, I would like to welcome Anuya madam and Shehzad ji to join us for joining us on this particular platform for the launch of Ajivika startup online platform. And also I would like to welcome Sovan Panda ji, and I have been associated with him also, and I have been hearing his sessions on startup Pathshala and other events also, and as a mentor also he's associated with our Jabalpur Incubation Center. And I was discussing with Agranshu a few minutes back also, and in past few days also, regarding this particular startup. And this particular startup, Ajivika, it is a very good online platform, and it is actually bridging our rural products, and it is actually giving them a platform to market their products. So it is basically opening up the urban markets for rural products. So this is the kind of like a technology intervention which we are expecting from our startups. And also since this is the launch of this particular startup, I would also like, on behalf of Jabalpur Smart City Limited, I would like to inform you guys that our ministry is also developing a online platform called as an innovation exchange platform, and in that particular platform is open to all the 100 smart cities of India, and all the startups of Jabalpur Smart City, we are getting them connected to that particular platform. So any smart city which is facing any kind of challenge, they can post that particular challenge in that particular platform, and any particular startup can respond to that particular challenge, and we can get them connected through these startups, and we can actually provide them an opportunity to implement their initiative in smart cities. So on this particular platform, I would like to inform you guys this also, and I would highly congratulate Snehal for the launch of this particular startup, and I wish you all the best for your future also. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. सर अनुया मैम, मैं आपसे स्नेहिल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, कैसे स्नेहिल को आप लोगों ने हेल्प किया एंड कैसे आजीविका एग्जिस्ट हुआ, वो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी। ठीक बोल दिया। जरूर। थैंक यू बरखा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले स्नेहिल जी, आपको बहुत बहुत सारी बधाई और माय वेरी ऑल द बेस्ट विशेस टू आजीविका एंड योर एंडेवर्स। अगर मैं छोटी सी अगर आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं, तो जब हमने स्मार्ट सिटीज के साथ काम करना शुरू किया था, तो हम ये लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा लेके चले थे, और जबलपुर में हम काफी समय काम कर चुके थे। तो जब ये इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा था, तो हम देख रहे थे, मैं और शहजाद जी, कि थ्रू आउट मध्य प्रदेश और थ्रू आउट इवन इंडिया जितनी सारी स्मार्ट सिटीज है और उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वो ज्यादातर उनमें से जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है वो आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस या आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे थे। और हम ये मान रहे थे कि अगर हम लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें अर्बन या रूरल ऐसी दो सेपरेशंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लोकली जो लोकल गवर्नमेंट्स अपने लोकल बिजनेसेस को बूस्ट देगा, उनको डेवलप करने में मदद करेगा,
तो आगे जाके ये कड़ी बन के हम ग्लोबली पहुंच सकते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट्स हमारे लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। और जब हम लोकल कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें कोई वेरी एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशन देने वाली भी कोई आइडिया हो सकती है, या फिर तो कोई काफी सिंपल सी लगने वाली, सहज सी लगने वाली, लेकिन ज्यादा बड़े ग्रुप को, समूह को जिसका इस्तेमाल हो, इस तरह की आइडिया हो सकती है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, लेकिन कोर आइडिया जो है वो काफी से सिंपल से लोकल सोल्यूशन के लिए, लोकल प्रॉब्लम के लिए लोकल सोल्यूशन होना ये काफी जरूरी है। और हम हमेशा ये मानते रहे कि एक इंक्यूबेशन सेंटर में अगर एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा आ सकता है, तो हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जहाँ की महिलाएं हैं जो शायद काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इनको रोज का रोजमर्रा जीवन जो जीते हैं उसे किस तरह से जीना चाहिए, या उसमें आने वाली कठिनाइयां किस तरह से उनको पार करके जानी है, ये अगर इनके पास आइडिया है तो उनको भी उतना ही कॉन्फिडेंट लगना चाहिए कि मैं स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में जा सकूं, अपनी आइडिया वहां पे रख सकूं और उसके ऊपर मैं काम कर सकूं, और उसका कोई बड़े समूह के लिए या बड़े ग्रुप के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जिसमें से बन पाए, या कोई एक लार्जर सोल्यूशन मिल पाए हमारी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये विचारधारा लेके हम शुरू में आए थे जबलपुर में। और मुझे अगेन याद है बरखा, और आप भी विटनेस है इस चीज की, कि हमने काफी सारे वर्कशॉप्स किए थे शुरू शुरू में, और हम कह रहे थे कि नहीं, हमें स्पेसिफिक सोशल एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करना है। और हमारा ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो हमारा ग्रुप था, शायद इतने ज्यादा संख्या नहीं थी, इतने ज्यादा नंबर्स नहीं थे, और ये लोग काफी से सहमे हुए से थे। इनके मन में कई सारे सवाल थे कि ये इंक्यूबेशन सेंटर और ये स्मार्ट सिटी, हम जाए क्या, क्या हमारे लिए कोई कुछ चीजें है क्या वहां पे, या कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स प्रोग्राम्स हमारे लिए भी है या नहीं है, हम कैसे अप्रोच करें। एंड दैट इज हाउ थ्रू दोज इंटरेक्शंस वी केम अक्रॉस स्नेहिल एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन। And then I guess rest is really Thank you, ma'am. for everybody to see ki where really Snehil and his team has really come. And I'm sure that Snehil, आप काफी सारे और युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, आप काफी सभी के लिए आप एक, you would be an inspiration. More and more, I would really expect more and more of our our friends, our young minds would actually even from the rural areas or areas between urban and rural on the peripheries of it would also look at different challenges, think of innovative solutions, find out opportunities from it, and they should be confident that the smart city incubation centers or smart cities are going to be there to help to nurture their ideas and encourage those local solutions to the local problems. So that is really in a nutshell. But once again, my heartiest congratulations, Snehil, to you, to also Jabalpur Smart City Incubation Center and team Incubation Masters and everybody on the board. Heartiest congratulations and wish you all the very best, Snehil. Thank you so much, ma'am. Thank you for your words, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। शहजाद सर, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने व्यूज स्नेहिल के लिए शेयर कीजिए। शहजाद सर, यू आर ऑन म्यूट। Yeah. I mean, congratulations to Snehil, not only Snehil, I mean, even the IM and the Jabalpur Smart City. I think, I think, I mean, these are the three most, the important, the component to make this happen today. I think especially the IM, the efforts and, the smart city support and the ideas, of Snehil, that's really making this to happen today, and Snehil is the person actually who has, I mean, translated and, transformed the entire processes into such a, thing which is, I mean, today we are inaugurating, or, I mean, his product will be online and providing the e-marketing platform to lots of very poor, the artisans. So that's a great service, actually, I would say, because I mean, if you look at, I mean, the incubation center, not only the Jabalpur,
even the entire country actually. I mean, most of the incubation center largely, catering to the very, not exactly the elite group actually, at least, those who are, the well, the well educated and those who are, the well, both actually, in terms of the socially and the economically, the population. Here actually, we are doing something which is really great actually, and I also feel proud of it, and I really congratulate to CLGF and VIA and the entire team actually, because this is one, the initiative which is directly, making some effect and the change actually in the life of the very poor people. And we know, what is the situation of, the artisans, and especially the artisans, those who are working in a very remote and the rural area. Nobody is there. No institutions, and they don't have any access to, to reach who can, improve their products, who can, do marketing for them, or do, enhance their sales and all, and or any kind of exposure. This is not only, the selling and enhancing their income, rather this will give them an exposure to the WWW actually, So it's a worldwide exposure for them actually. Because they will be getting some feedbacks, and they will also understand, what is the needs and the demand, and so how the market is, behaving, and what is the current, the importance of, all these artisans products and all. So I think it's really a great job actually, which Snehil has done, and I appreciate, the IM also, who took this, initially they were not very sure actually whether these social entrepreneur kind of things will also work actually. And if you look at the statistics, I think Sovan Saab know better actually, the statistics. Only less than 5%, the social entrepreneurs are incubated actually, got the space in incubation center. And I really, I'm looking forward, and I hope actually, that, this will really one of the key milestone actually, towards linking actually the rural artisans to the incubation center. And if you look at, any incubation center in this country, and just think about, can you imagine a very small member from the self-help group, or a very poor artisans, sitting there in the incubation center? You can't think of, that's ecosystem doesn't provide, that kind of, the imagination. This is beyond the imagination. So I really appreciate, and I'm very glad actually. In fact, I'm really glad actually to see this is, this is how these poor artisans got the space actually. So my all the best wishes, and I am ready to, support Snehil and the IM, and Jabalpur Smart City. And we are working actually, for last 5 years, and if I'm right actually, it's about 5 years. We are working in Jabalpur Smart City. Not only a smart city, before the smart city we were, and we were engaged actually in the developing the proposal of this smart city also, directly or indirectly. So I think, there is a very strong association with Jabalpur Municipal Corporation, and it's a smart city. So thank you very much, Barkha, for giving me, time and space to talk about, these products, which is very close to my heart. So thanks, and wishing you all the best, Snehil. Thank you so much, sir. It's always a pleasure. Now, I request Sovan sir to please share your views. Yeah, so let me first congratulate Snehil. You are really doing a very, very good job. You are working at the grassroots level, okay, connecting all the rural people from the rural India, and then taking them to the market. It is a noble, very, very noble cause. Let me tell you that. And ऐसा करने से it can only happen if you have a very strong intent, pure intent. And I truly believe that social enterprise can only be built by a person with a very, very pure and noble heart. So that's the way you have actually shown a very powerful way, and you are becoming an inspiration to all the other youths who wants to make social entrepreneurship as a possibility and create
a very powerful ecosystem. Thank you So so Snehal, much. let me congratulate you once again. A very, very good job done by you. And I really hope that you take this to entire country level. So every village, every artisan should be connected through your platform, and you give them exposure and give them an opportunity to recognize. See, they need artisans. They don't need just money, or they need then opportunity. They need recognition, and you are providing that recognition through your platform, which is so very powerful. So all the best wishes to Snehal. And let me also congratulate Jabalpur Incubation Centers and Incubation Master for it's an ecosystem. Let me also say that JIC is taking a very good initiative, and it is leading in India right now in terms of showing how an incubation center should be built, how many startups should be supported, and we can make possibilities out of every person who walks in with just an idea, and how we can support and take it to the next level. So really hats off to JIC, and Snehal, you are in the right place. It is only an opportunity for you. This is one milestone that you have cracked. Many, many more milestones are there on the way, and just keep moving. All the best wishes from all of us, and really we hope you will do really wonders. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sovan sir. So, we are ready to launch the product now. Snehal, you ready? Yes, sir. Yes, Barkha, I'm ready. So I would like to invite Mr. Narendra Vishwakarma. Snehal, Sir. before you go to, I just want to mention actually, a couple of points actually, which is really important for you to consider and Yes, to sir. work on it. You must recognize the challenges actually which you are going to face. Because when you are dealing with the very poor people and to the people actually who are living in the remote areas, this is not a, yes, we congratulate you in the beginning, but you have to understand and appreciate, the challenges which you are going to face. And I think you need to prepare, for these challenges. And the challenges of the logistic, which is going to be, take you a lot of efforts and time. And maybe sometimes you have to struggle with your posting and, the viability, economic viability and all. So you have to keep in mind. And you need to find out, some really good solution. And you need to talk actually with a lot of people, especially, those having the experience dealing with this business, this kind of business. And the challenges of, the quality and the challenges of, the logistics, like, the consignment, how the packaging and all those stuff, it's a huge challenge. And you are working, the product is not with you actually. You are not selling, the product is somewhere. Yes, and you are, at one point. And so you have to coordinate, a lot actually. So these are the challenges you have to remember to, and I know actually, you can do it, and you understand it, in much better way. So, just to mention, just to give you, some the points, which you have to work and which you have to, consider while working with these artisans. Yes, sir. So, thank you very much. Thank you so much, sir. Yeah. It is Yeah, never being possible without support of Shehzad sir and Anuya ma'am. ये आजीविका जब हमने एस्टेब्लिश किया था या जब हमने इसके बारे में सोचा था, तो शहजाद सर वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने अभी 1 साल तक आजीविका को एस्टेब्लिश करने में पूरी मदद की है. दैट मींस फ्रॉम द अगर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, हमें प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करने की जरूरत है, वो सारा जो हमारा भी जो ट्रेनिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं शहजाद सर और अनुया मैम की वजह से. एंड ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने हमको MPSRLM से भी कनेक्ट कराया है. आजीविका फ्यूचर में मे बी, क्योंकि हमारा डिस्कशन चल ही रहा है MPSRLM के साथ में, तो माइट बी पॉसिबल आजीविका MPSRLM का एक ऑफिशियल शॉपिंग कार्ट भी बन सकता है, बिकॉज वी आर इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन विद SRLM एंड CEO साहब ऑफ MPSRLM. So thank you so much, Shehzad sir and Anuya. Snehal, we can start now? Yes. Okay.
share your screen? Yes, I'm sharing my screen, Barka. Snehal, I can't see the screen yet. Snehal, you are on mute. Am I audible now? Yes. Yeah. Yes, sir. It would take few moments. It will take time, 2 to 3 minutes because he is connecting again. Snehal, are you there? Yes, Barka, I'm here. Okay, so till the time you can start explaining about the features that Yes, you yes, have yes. in your application. Yeah. Okay. 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 So, for the explanation of Ajivika mobile application, I would like to invite Mr. Narendra Vishwakarma, who is the developer of Ajivika platform and the backbone of Ajivika. So here I'm overing to Mr. Narendra.
Henry. Thank you. Good afternoon. Switch to screen. Okay. Okay. Retry. Wait. Okay. Narendra, you can start. Yeah. I'm starting. Yes, my screen is visible. Yeah, it's visible. Okay. So ये आजीविका ऐप है जो हमने 3 डिफरेंट फेज पे डिजाइन किया हुआ है। इसका हमारे पास एक वेबसाइट भी है जो ऑलरेडी हमने लॉन्च किया हुआ है। देन ये अपग्रेडेड एप्लीकेशन है, इसमें हमने काफी चीजें but I think this is something completely different actually, which is appearing on my screen. Yes, sir. I may be wrong, but yes, sir. Actually, this is 250 million downloads and 400 million. Okay. Okay, carry on. Sir, actually this is the next version of Ajivika and हमने इसमें काफी चीजें अपग्रेड कर दी हैं, लाइक इसका थोड़ा सा यूजर फ्रेंडलीनेस और बढ़ा दिया है और इसमें सारी चीजें लाइक पेमेंट गेटवे और OTP ट्रांजैक्शंस वो सारी चीजें मेंशन करती हैं। इस ऐप से समथिंग 50+ ऑर्डर्स भी हो चुके हैं जिसको सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। बट हमारे स्क्रीन पे वो आपका आजीविका का कहीं पे कोई नाम निशान नहीं आ रहा है। I can't see anything actually on this screen. So it's coming like 250 million downloads, 400 million sessions per month, 42 million bridge miles per month. I mean, is it what Ajivika is about? No, sir. That is different thing. Actually, ये जो आजीविका एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर में अपग्रेड नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ हमने 4 days बैक इसको अपलोड किया है, बट थोड़ा सा प्ले स्टोर टाइम ले रहा है अभी, गूगल प्ले स्टोर, दैट्स व्हाई। तो ये हमारे जो लोकल क्लाउड सर्वर है, प्राइवेट क्लाउड है, वहां पर ये अवेलेबल है। मैं इसका कार्टिंग प्रोसेस आपको दिखाना चाहता हूँ। CON पेमेंट गेटवे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट जो वर्जन था उससे भी ज्यादा हमने इसको स्मूथ किया हुआ है। कैश ऑन डिलीवरी एंड यूजर पे कनेक्टेड है। सपोज कैश ऑन डिलीवरी में जाते हैं तो जैसा कि जनरली आप देखते हैं ये वैसा ही, बट बैक एंड पर बहुत सारी चीजें जो हम मैनेज की हैं वो हैं इसमें। लाइक अभी जो प्रोड्यूसर्स है, अब प्रोड्यूसर भी यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में जो प्रोड्यूसर है वो उसकी शॉप भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कंप्लीट जो उसके प्रोडक्ट हैं कंप्लीट वो भी यहाँ डिस्प्ले होंगे। बिकॉज ऑफ अगर कोई यूजर है जो डायरेक्टली उस परचेज करना चाहता है उसके प्रोडक्ट को, वो भी यहाँ से परचेज कर सकता है। Actually, Anuya, I mean, just hold on. Anuya, what you seeing actually on your screen? I mean, is it I'm looking? I can't. No, I think Snehal,
We are not able to see your screen, the proper screen. There is just one, we can see something that says multi-platform support, 250 plus million downloads and something like that. I think you need to just re-look at the screen. Okay. Snehal, can you share the screen of that application? Yeah, I already shared. No, it's please. We are not able to see. Okay, share it again, Snehal. Yes. Again, it's the same screen. Okay. No. It's not. Wait. Okay. Or you can remove the share and talk about the features. You can start. That's what I'm saying, Snehal. Yeah, it's better to explain actually the feature. You can explain. Yeah. Both of you talk about all the features which is there. This is the first look of Ajivika's new version of application, ma'am. Snehal, there is no screen yet. You can start explaining the features of your application. If it's not there, I mean, if you can't open the application, that's fine. You can start explaining by verbally. Okay. Yeah. So basically Ajivika के एप्लीकेशन को का जो हमारा फर्स्ट वर्जन था उसको हमने और अपडेटेड करके आजीविका के एप्लीकेशन में हमने रिसेंटली बहुत सारे फीचर्स बढ़ाए हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये पूरा एप्लीकेशन हर एक पर्टिकुलर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पर्टिकुलर आर्ट या उनके जो भी प्रोडक्शंस हैं उसको फ्रंट में रख के, सपोज हमने इस अंदर एक सेगमेंट बनाया है फूड एंड ग्रेन्स का, सो मैक्सिमम जो ट्राइबल फूड या फिर जो जैसे हमारे गाना प्रोड्यूसर कंपनी का बहुत सारा मिलेट नमकीन एंड बहुत सारे वो मिलेट्स के अभी नए नए प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे, तो हमने उसके लिए एक अलग सेगमेंट बना के उसको एक शॉप बोला है। वो एक अलग शॉप होगा हमारे पोर्टल के अंदर, एंड इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम millet section or you're from food and grain section, so you can go for a food and grain section and you can purchase from there as well. And इसी तरह हमने अलग अलग ट्राइबल आर्ट्स को से हमारे एक ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइब है अगड़िया ट्राइब, so they are working with made प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, आयरन के प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं। सो उनके आयरन के प्रोडक्ट्स जो हैं आयरन को वो लोग कलेक्ट करते हैं जंगल से एंड देन फिर उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो आयरन आर्ट का हमने पूरा हिस्ट्री उसके अंदर लगा के और अगड़िया ट्राइब का थोड़ा सा हिस्ट्री लगा के देन फिर उनके बनाए हुए सारे प्रोडक्ट्स को हमने उस एक पर्टिकुलर आयरन आर्ट के सेक्शन में रखा हुआ है। ऐसे ही हमारे वुड और बैम्बो के अलग अलग सेगमेंट्स को, बिकॉज फ्यूचर में हमारी प्लानिंग इनको अलग अलग एरियाज में और अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ में क्लस्टर्स बनाने का भी हम प्लान कर रहे हैं आजीविका एंड MPSRL के साथ। सो उन सभी को हमने एक सेपरेट सेक्शन उसके अंदर दिया हुआ है। सारे प्रोड्यूसर्स अपने अपने प्रोडक्ट के और उन सभी को एक अलग एक इंडिविजुअल लॉगिन आर्ट या जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए एक सेपरेट लॉगिन होगा और मतलब दैट ऑलरेडी मेड इन एप्लीकेशन। सो ऐसे ही उसको हम फर्दर चलाने वाले हैं। हर एक क्लस्टर्स एंड हर एक आयरन और बाकी जितने आर्ट्स हैं उन सभी आर्ट्स को अलग अलग मेंशन करके, एंड कार्टिंग में भी हमने यही इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके अभी सारी चीजें जो ट्रेंडी हैं गूगल ट्रेंड्स के का एनालिसिस करके जो भी चीजें ट्रेंडिंग में हैं उन सारी ट्रेंडिंग चीजों को हम ऊपर लेके आते हैं एंड उनका ही ये भी कहते हैं कि आप उन्हीं का प्रोडक्शन ज्यादा करें, बिकॉज
ट्रेंडी चीजों को हमको ज्यादा हम प्रेफरेंस दे रहे हैं वहाँ पे। तकरीबन हर Snehal, you can Sorry? talk about the Diwali package. Yes, recently we have made a Diwali package, which is for rupees 2499. इस दिवाली पैकेज में हमने तकरीबन 50 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स के पास से आ रहा है। इस दिवाली पैकेज के अंदर हमारे पास दिवाली पूजन का सारा जो यूटिलिटी प्रोडक्ट हैं वो है। इसके अंदर आपके होम डेकोरेटिव्स कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर क्ले स्टेच, इसके अंदर वुड मेड हमने बहुत सारा एक वुडन चीजें बनाई हुई हैं उनके साथ में, प्रोड्यूसर्स ने हमारे बनाए। तो ऐसे एक 15 प्रोडक्ट्स का हमने एक दिवाली पैकेज भी आजीविका ऐप में लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली हमारे सारे प्रोड्यूसर्स को इन 15 डेज की इस सेल में, दिवाली सेल में, ऑलमोस्ट हर एक प्रोड्यूसर को हम 30% का प्रॉफिट दे रहे हैं। एंड 15% जो कि आजीविका का हमारा हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर्स को हमको 30% का प्रॉफिट देना है, एंड 15% हमारी मशीनरी की कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 6% का प्रॉफिट हम सारे प्रोडक्ट्स में लेते हैं। तो जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट कंपैटिबल रखने के साथ साथ में हम 30% उनके लिए कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हर प्रोडक्ट की मेकिंग में हमारे प्रोड्यूसर्स को 30% का प्रॉफिट हो, एंड 15% की हमारी मशीनरी का उसमें से बस चीजें निकल आए। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने आजीविका बनाया भी था, एंड कंटिन्यूसली हम इसी कॉन्सेप्ट पे चल भी रहे हैं। सो दिवाली पैकेज जो है हमारा वो 2499 में हम तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स का होम डिलीवरी कर रहे हैं। Okay, Snehal, you can tell about like how they can download the Ajivika app, because there are some technical issues going on, so I think we can't show the application launch, right? Yes, so you can download this from Google Play Store and our web app as well, which is ajivika.com. So and you can buy a Diwali package from web app as well. So हमने 2 मोड्स में इसको रिसेंटली बनाया हुआ है। तो दिवाली पैकेज हमारा ऐप में भी अवेलेबल है और हमारे वेब ऐप में भी अवेलेबल है। एंड रिसेंटली अभी ये रैंक भी कर रहा है गूगल पे, हमारा वेब ऐप आजीविका दिवाली पैकेज। और यू कैन गो फॉर ajivika.com। सो आपको एप्लीकेशन भी वहीं पे मिल जाएगा एंड वेब ऐप तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे। Okay, so I think we can't show the launch. I mean, there's something is going on. Snehal, can you try it once if we can show the features, or we can... Yes, Barka, I'm trying. Please remove that screen and then you can try it once. I think there is coming up, Snehal? Yes, sir. There is some technical issues with the network and sharing application. Okay, Snehal, no issue. Then I think we can wind up and we can close the session. So thank you so much, everyone, for your time. And I'm really sorry for that we cannot showcase the application just because of technical issue. But you can download it from Play Store, and you can see in the web application as well. So thank you so much, everyone. And Anuya ma'am, आप कुछ बोलना चाहेंगे एंड में?
स्नेहिल, डू नॉट लूज होप. अगर अभी नहीं दिखा स्क्रीन पे, कोई बात नहीं है. हम तो ऐसे ही रास्ते पे चल के यहाँ तक पहुंच गए हैं. तो आई एम श्योर एवरीबडी Definitely, ma'am. who's attending this program, seeing this program, would definitely make an effort to go search in the Google app, Google Play Store, the Ajivika app. And once again, all the very best to you. Never ever lose hope. And we should always strive together to make lives better and to reach development to each and every person in the community. Let's make this a Definitely, ma'am. so really all the best, and Barka, JIC, and all the mentors. Once again, thank you so much for being such a wonderful team and for really taking you. this challenge of trying out something different than what others maybe are doing. So wonderful. I'm really proud of you. Really proud of your achievements. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Sohan sir. Shahzad sir, I think he left. So Thank you. Snehil, once again, all the best. And Thank you so much, sir. अभी तो आगे बढ़ते जाना है. That is most important. ठीक है. So you are bringing to people's life. तो बस उसमें फिर रुकना कहाँ है? So you just have to keep moving, right? And people Thank are you, there sir. to support. People are there to nothing like it. So good, and you are doing a great job. Keep moving. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Anya, ma'am. thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. Thank you, ma'am.